Abhinandan, Abhinandan, Abhinandan. Friday Fiesta at 7 p.m. powered by Magic of Flavors by Rajesh तारा सीजन 3 के आज के इस एपिसोड में आपका अभिनंदन करते हैं, आपका अभिवादन करते हैं। फ्राइडे यानी कि शुक्रवार आ गया और हर फ्राइडे की तरह से सीजन 3 में हालांकि हमने ये सोचा है कि हम हर फ्राइडे शायद आपके साथ मुखातिब ना हो, बट स्टिल पिछले फ्राइडे भी हमने बात करी थी आपसे और आप हमारे साथ जुड़े और आज इस फ्राइडे अगेन हम आपके साथ हैं। इसका एक खास रीजन है। पहले 2 सीजन्स में लगभग 50 एपिसोड, 50 से ज्यादा एपिसोड हमने किए। केवल 2 ही शहर ऐसे थे, दिल्ली एनसीआर और मुंबई, क्योंकि उसमें बहुत विशाल फूड स्ट्रीम्स हैं, तो हमको शायद 1 से ज्यादा एपिसोड उनके लिए करने पड़े। और केरला एक ऐसी जगह है जिसको कहते हैं गॉड्स ओन कंट्री। केरला एक ऐसी जगह, एक ऐसा राज्य है जिसके लिए हमको 2 एपिसोड करने पड़े और हो सकता है 3 भी करें। पिछले सप्ताह हमने बात करी थी केरला के उन शहरों की जिसका नाम है कन्नूर और कोझिकोड, यानी कि आपका, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। वहां के खाने की चर्चा हमने करी और अब इस बार हम बात करेंगे त्रिवेंद्रम की। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में पार्वती ने हमको बताया था नॉर्थ केरला और साउथ केरला, तो पिछले हफ्ते जब हम बात कर रहे थे कन्नूर और कोझिकोड की या कैलीकट की, तो वो था नॉर्थ। और अब चलते हैं साउथ की तरफ। आज बात करेंगे त्रिवेंद्रम की। त्रिवेंद्रम का जो ओरिजिनल नाम है उसको बोलते हैं तिरुवनंतपुरम। बहुत मुश्किल है प्रोनाउंस करना, खास करके हमारे जैसे नॉर्थ इंडियंस के लिए, बट यस, मेरे को थोड़ी सी मुझे लगता है कि ईश्वर की ये कृपा है कि मैं तिरुवनंतपुरम बड़े फ्लो से बोल लेता हूं। तो आज हम बात करेंगे तिरुवनंतपुरम की। और केरला एक ऐसा शहर, क्योंकि गॉड्स ओन कंट्री है, हमारे श्रृंखला में जुड़ गया, जिसके लिए हमने 1 से ज्यादा एपिसोड किए। केरला में एक बहुत मशहूर टेंपल है, टेंपल पद्मनाभन। वो अपने आप में एक हेरिटेज है और बहुत श्रद्धा से लोग उस टेंपल में जाते हैं। तो आज इस टेंपल की भी बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने वाली हैं एक बहुत ही हंसमुख सी, चुलबुली सी, एक बहुत ही सफल फूड ब्लॉगर अंजना गोपा कुमार। अंजना पेशे से मार्केटियर हैं, लेकिन फूड के साथ और एफएनबी इंडस्ट्री के साथ उनका बड़ा गहरा रिश्ता है। अंजना अपनी एक फूड एंड बेवरेज कंसल्टिंग चलाती हैं और उनसे बात करके इतना मजा आता है कि वो हर वक्त मुस्कुराती रहती हैं। इनकी स्माइल जो है इतनी इन्फेक्शियस है कि आप मुस्कुराए बिना न रह पाएंगे। अंजना एक रेस्टोरेंट कंसल्टेंट, और मजे की बात यह है कि आज दिन में मैं जब उनसे बात कर रहा था, वो आज सुबह भी एक रेस्टोरेंट के किचन में कुछ वहां काम चल रहा था और वहां खड़ी थी और बाहर आके गाड़ी में बैठ के उन्होंने मुझसे बात करी। ये है उनका पैशन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री के लिए। अंजना पहले उबर ने जब ईट्स का सर्विस स्टार्ट करी थी, केरला में उसकी मार्केटिंग मैनेजर थी। टोरंटो में पंपकिन कार्ट की मार्केटिंग मैनेजर थी और एक बहुत ही सफल फूड ग्रुप भी चलाती हैं जिसका नाम है ईट एट त्रिवेंद्रम। तो आपके लिए गाइडेंस है कि त्रिवेंद्रम में जब आप जाएं तो अंजना से जरूर संपर्क करें। वो आपके ईट एट त्रिवेंद्रम में आपको पूरी जानकारी देंगे कि त्रिवेंद्रम में जाके कहाँ खाना है। आपकी सुविधा के लिए हम बता दें, उस फूड ग्रुप में कम से कम 2 लाख से ज्यादा मेंबर हैं और इतना सफल ग्रुप है कि हर साल वो वहां पर एनुअल अवार्ड शो करती हैं, जिसमें वो लोकल रेस्टोरेंट्स और कैफेज को अवार्ड भी देती हैं। मेरा सौभाग्य अगर रहा तो शायद अगले साल मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूंगा। लेट्स सी हाउ इट गोज। सो अंजना से आज हम बात करेंगे त्रिवेंद्रम की और उनके खाने की। देखिए हमारे दोस्त अनिल कुमार जी, उन्होंने ऑलरेडी लिख दिया है कि आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन तिरुवनंतपुरम। वाह अनिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बड़ा मजा आएगा। बहुत क्वेश्चंस आप अंजना से पूछिएगा और बड़ा मजा आएगा। तो इससे पहले अंजना हमारे स्टूडियो में आ चुकी है। इससे पहले कि मैं अंजना को आपके से रूबरू कराऊं, एक हमारी आदत है छोटी सी, हम कहीं ना कहीं से कुछ तस्वीरें चुरा लेते हैं और एक छोटा सा 1 मिनट का एवी उनका दिखाते हैं कि अंजना करती क्या है, दिखती कैसी है, हंसती कैसे है, और उसके बाद अंजना को आपके सामने लेके आएंगे। तो लीजिए एक झलक अंजना गोपा कुमार की।
तो ये थी एक झलक अंजना गोपाकुमार की, त्रिवेंद्रम से हमारे साथ जुड़ रही हैं आज। और मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छे से बड़ी उनकी इन्फेक्शियस स्माइल है, और मुझे जब भी मैं उनसे बात करता हूँ और वीडियो पे देखता हूँ तो मुझे दिमाग में एक कपलेट याद आता है। अंजना, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, अंजना हिंदी बहुत अच्छे से समझती हैं, हालांकि साउथ इंडियन है लेकिन स्टिल बहुत अच्छी हिंदी समझती हैं। तो अंजना, ये आपके लिए और हमारे दर्शकों के लिए अंजना की इंट्रोडक्शन में, देखकर आपकी मुस्कुराहट देखकर आपकी मुस्कुराहट हम तो होश गंवा बैठे। देखकर आपकी मुस्कुराहट हम तो होश गंवा बैठे, होश में आने ही वाले थे कि आप फिर से मुस्कुरा बैठे। तो लीजिए, अंजना आपके सामने आ रही हैं। अंजना को हम आपसे रूबरू कराते हैं और अंजना से बात करेंगे त्रिवेंद्रम के खाने के बारे में। नमस्ते। अंजना, नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन किसी ने मेरे लिए मतलब दिया नहीं होगा। इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, अभी दिल खुश हो गया। अभी क्या करूं, इन्फेक्शियस में तो पूरा रहेगा ही पूरे लाइफ में। देखिए, आप वर्कशॉप्स करती हैं, अभी भी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था आप 31st को भी एक वर्कशॉप कर रही हैं, तो आप चाहें तो आप मुझे अपना परमानेंट मैनेजर रख सकती हैं, मैं आपकी अच्छी इंट्रोडक्शन दिया करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, सो अंजना, वंस अगेन वेलकम टू आवर शो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं, जी। मेरे साथ बहुत सारे हमारे श्रोता भी जो उन्होंने मेरे को दिन भर में मैसेज किया, दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द त्रिवेंद्रम फूड। और हम आज बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे केरला इन जनरल की, और उसके बाद आएंगे हम स्पेसिफिकली त्रिवेंद्रम में। और हमारे बहुत से श्रोता अंजना ऐसे हैं जो मुझे लगता है कॉपी पेंसिल लेके बैठते हैं नोट करने के लिए कि अच्छा, त्रिवेंद्रम जाएंगे तो उस शहर में जाएंगे, कहाँ पे जाके क्या खाना है। तो यस। हम स्टार्ट करेंगे अंजना। देखिए, जितना आपके बारे में मैं जानता था मैंने आपको बताया, सब अपने दोस्तों को शेयर किया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि आपकी अर्ली लाइफ त्रिवेंद्रम में कैसी थी, खाने में दिलचस्पी कैसे बढ़ी, और ये थैंक गॉड आई एम फैट, आई डोंट नो आपने ये क्यों रखा है, आप तो फैट कहीं से भी नहीं है, ये इसके पीछे क्या स्टोरी है? थैंक यू सर, पहले तो बिग थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू कम टू फ्राइडे फिएस्टा एंड बी पार्ट ऑफ मैजिक ऑफ फ्लेवर्स। मतलब आई डोंट नो, इट्स अ वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। थैंक यू, मैं इतना एक्साइटेड हो गई थी जब आपने मैसेज किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ट्रिवांड्रम के बारे में मैं मतलब बात करने के लिए जो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, आई एम वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि बहुत कम मिलता है ऐसे ट्रिवांड्रम के बारे में बात करने के लिए। ज़्यादा तो केरला के बारे में बात करती हूँ मैं। जी। तो त्रिवांड्रम, मैं पैदा हुई थी त्रिवांड्रम में ही, तो बचपन से यहीं पे रही हूँ। मम्मी पापा यहीं पे सेटल हो गए थे, तो यहीं से हूँ। और फूड का जो पैशन है वो बचपन से ही तो रहा है, क्योंकि मम्मी पापा इतने बड़े फूडीज हैं, दो अलग किस्म के फूडीज हैं। मम्मी ओ। पूरा मतलब जो भी खाना मिलेगा वो खा लेगी, पूरा नया क्विजीन ट्राई करने में मतलब माहिर है। कुछ भी खिला दो वो हंस मुझे, मतलब मेरा जो इन्फेक्शियस स्माइल है उससे भी इन्फेक्शियस स्माइल है मेरी मम्मी की। ओ तो वाह। Amma is very excited about food. Achan on the other hand, my dad, बाबा जो है वो ट्रेडिशनल खाने के बहुत मतलब फैन है। वो हम्म। पूरा वर्ल्डली कुजीन नहीं खाएंगे, अगर इंटरनेशनल ट्रिप भी जाएंगे वहां पे जाके शरवण भवन से इडली खाएंगे। तो लेकिन अगर आपको यहाँ पे लोकल जगह पे आना हो तो हाँ। पापा के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे छोटे जगह में जो जो मस्त मस्त खाना मिलता है पापा ही हाँ। लेके जाते हैं हमें। तो वाह। बचपन से भाई और मुझे हमें मतलब वो छोटे छोटे जगहों पे पापा ने मतलब पापा लेके गए, खिलाए पिलाए। और भैया को भी इतनी दिलचस्पी है फूड के मतलब ऊपर। भैया भी एकदम बढ़िया खाना बनाते हैं, एकदम 11-12 पीपल के लिए, मतलब भैया केटरिंग भी कर पाते हैं। ओ उतना बढ़िया। वाह। म्यूजिशियन है बाय प्रोफेशन, लेकिन बहुत हम्म। दिलचस्पी है। तो बचपन में आई वाज सेंट टू माय ग्रैंडमदर बिकॉज माय मॉम फेल इल, and I grew up with my grandmother for a few years. So you know हम्म। how that whole nani thing comes up, she keeps on feeding you. So I had become very moti, like very fat and bubbly at that time. So that's how I was fat, and that's how thank god I'm fat came up, because as I grew up with my grandmother, हाँ। and there was a lot of food involved in my life. और बचपन से ही फूड के लिए मेरे को इतना एक्साइटमेंट रहा है कि वेन एवर इन सैटरडे संडे नानी के पास से पापा लेके आते थे घर, ओके। और मैं इतना एक्साइटेड होती थी मम्मी पापा से मिलने के, मतलब उससे भी ऊपर एक्साइटमेंट रहता था कि मम्मी बनाएगी फुल्का, रशियन सैलेड और चिकन करी। तो वो वाह। खाने का एक्साइटमेंट रहता था कि बचपन से सोचती थी मैं कुक बनूंगी। तो हम्म। जब स्कूल खत्म हुआ तो मुझे शेफ बनना था,
और भैया ऑलरेडी एक ऑल्टरनेट प्रोफेशन चुन लिए थे म्यूजिशियन हुँ, बनने के लिए, और हाँ, पापा को कन्विंस करना आसान भी था। और मैंने हुँ, बोला सब सीखना है कुकिंग, तो पापा ने बोला अगर डिग्री है तो सीख लो। तो मैं गई थी वर्कशॉप मणिपाल मणिपाल यूनिवर्सिटी, और कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से ड्रॉप आउट होना पड़ा। तो दैट टाइम आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग बिकॉज आई फेल लाइक ऑल माई रोड्स वेर आई वांटेड टू बी अ शेफ वाज क्लोज्ड. So my brother used to call me Tadichi, which means fatty in Malayalam. ओके, तड़ची, So I asked my brother क्या नाम रखे ब्लॉग का. He only told me कि तू खा पाएगी, मतलब बना नहीं पा रही है, ठीक है, खा तो ले रही है, तो मतलब हुँ, कुछ तो लिख ले. So Eat It Trivandrum was already there. I thought I'll start something on my own as well. हुँ, तो तो मैंने मुझे क्या नाम रखे, इस लाइक थैंक गॉड आई एम फैट, रख दे. आई एम हुँ, लाइक ठीक है चलो, कुछ सोच ही नहीं, मैं ऐसे डाल दिया. तो थैंक गॉड आई एम फैट स्टक, बट द फर्स्ट थिंग पीपल आस्क मी इज जस्ट लाइक यू आस्क, व्हाई थैंक गॉड आई एम फैट, एंड इट स्टेज. So now हाँ, become a brand. I'm like, let it stay. I'm not gonna change. वाह! Food is always a part. I grew up watching more than cartoons. I've grown up watching Highway on My Plate. Cooking is in Rocket Science. Ritu Dalmia shows. हाँ, Aditya Bal, Saransh वाह! Goila. All of that. So it's been a part of my life, I think. Yeah. वाह! वाह! आपकी तरह से बहुत सारे लोग एक्चुअली इस तरह के शोज़ से जुड़े हैं और वहीं से उनकी इनिशिएशन जो है फूड वर्ल्ड में हो गई। हाँ जी. तो अंजना एक चीज़ और बताएँ कि ये जो आपका ईट इट त्रिवेंद्रम ग्रुप है, हाँ जी. इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि ये ग्रुप क्या है? ये फ़ेसबुक पे है, कहाँ है? कैसे क्या आप क्या-क्या करते हो उसमें? ओके, सो ईट एट ट्रिवेंड्रम 7 साल पहले शुरू किया गया था. 7 साल अभी हमने कंप्लीट किया है. एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की थी हमने. तो ईट एट ट्रिवेंड्रम मैंने नहीं शुरू किया था. हम चार लोग हैं ईट एट ट्रिवेंड्रम के पीछे. एडमिन्स 4 हैं हम, अरविंद, हुँ, विनय, असलम और मैं. हुँ, और जब मैं 18 की थी तब शुरू किया था हमने. तो आई वाज़ राइट आउट ऑफ कॉलेज, एंड ये अरविंद जो है पुणे में पढ़े थे, तो वहाँ पे पुणे ईट आउट्स करके एक ग्रुप था. तो अरविंद ने हुँ, सोचा कि हाँ, पुणे में ऐसा कुछ है, त्रिवेंद्रम में क्यों नहीं है? तो उनको ओके। वो एक्रोनिम बहुत पसंद आया, ईट. तो हुँ, ईट एट त्रिवेंद्रम कर देते हैं, फेसबुक ग्रुप शुरू कर दिया. तो पहले उन्होंने उनके दोस्त को रिक्वेस्ट भेजा, एक क्लोज ग्रुप है हाँ, फेसबुक में. हाँ। तो फेसबुक पे हमने शुरू किया था. तो ओनली बिकॉज़ त्रिवेंद्रम डिड नॉट हैव अ वेरी वास्ट फूड कल्चर एट दैट टाइम. देयर हाँ, वाज़ अ हाँ। लॉट ऑफ लोकल फूड, लेकिन लोग नहीं थे ऐसे रिव्यू करने वाले. टियर 3 सिटी है हमारी, छोटी-सी हाँ, जगह है. तो या उन्होंने वो ग्रुप स्टार्ट किया और फ्रेंड्स को ऐड करने लगे. किसी ने मुझे भी ऐड किया था, और मैं हाँ, कलनरी स्कूल में थी तब. तो बहुत सारे ऐसे रिव्यूज़ लिखने लगी मैं रेस्टोरेंट्स के बारे में. पापा जहाँ का भी कहीं पे लेके जाते थे, वहाँ के हाँ, बारे में लिखने लगी. और अरविंद कॉट ही कॉट दैट अटेंशन कि हाँ, मैं लिख रही हूँ. हाँ, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया और पूछा कि मेरा बिज़नेस प्लान्स है इसके साथ, वुड यू लाइक हाँ, टू जॉइन? तो हाँ, मैं बच्ची थी, मैंने बोला हाँ, बिज़नेस चलो कर लेते हैं. तो मैंने भी जॉइन कर लिया. फिर मैंने, मतलब 4 बंदे हम. So हुँ, Italy started as that Facebook group. Now it has over 170,000 people as वाओ! close members, and we are very strict with who all we add in the group. You have to be from Trivandrum or married to Trivandrum or have some sort of connection to Trivandrum. तो ट्रिवेंड्रम के साथ कुछ तो मतलब रिश्ता रहना चाहिए आपका. अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर रहोगे तो प्लीज आ जाओ. ट्रिवेंड्रम विजिट करना चाहते हो तो प्लीज ऐड में. सो एक क्वेश्चनर रहता है ग्रुप में, वो फिल करने के बाद हम चुन चुन के ऐड करते हैं लोगों को. तो uh, मतलब मुझे लग रहा है कि मेरा कोई चांस नहीं है कि मेरे को उस ग्रुप नहीं, में एंट्री आप ऐड करूँगी, आप इतने बड़े फूडी जो. मतलब इट विल बी आवर ऑनर. So that's how ग्रेट। we started. Then we slowly got into Instagram. But our main idea is not a digital platform. We are more of a community. So we used to हुँ, do these events called Eat Up. Eat Up is हुँ, most likely restaurants जो अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं. हम लोग वहाँ पे जाके उनको मेन्यू के बारे में सजेशंस देते हैं, ये करो वो करो. और एक दिन का वो उनको रेस्टोरेंट शट करके जितना वो कैपेसिटी है वहाँ पे एक इवेंट कर देते हैं हम. जो या इवेंट टिकेटेड रहता है, ग्रुप के मेंबर्स आ सकते हैं. हमने ओके। 10 मीटअप कर लिए होंगे अभी तक. और हुँ, बेस्ट फीलिंग ये है कि उसमें से जो फ्रेंड्स ग्रुप बने हैं ना, तो वो लोग अभी भी फ्रेंड्स हैं. वो लोग अभी भी ऐसे फूडी ग्रुप बन के जाते हैं खाना खाने. हुँ, तो हुँ, वहाँ पे जाके ये फूडीज़ जो रहते हैं, वो लोग खाना खा के रिव्यूज़ देते हैं, ओपिनियंस देते हैं, ये करो, वो करो. तो वो रेस्टोरेंट फिर से एकदम फुल हुँ, पावर में आ जाता है. सो बिकॉज़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी आल्सो गोइंग इन. ग्रेट, So ग्रेट, we ग्रेट। used to do that. We had something like Zomato Gold called Eat Loyalty Card, which we shut ओके, down after COVID because of the hassle of fire keeping it up. Now we do restaurant awards also. So वाओ! we're both basically like a media and a community. It's like it's everything. We have done a flea market. We are experimenting with whatever we can do with food in Trivandrum. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग।
सो अभी हम बात करते हैं त्रिवेंद्रम की, और अंजना, एज ए फूडी, इफ यू लिफ्ट अप योरसेल्फ अप इन द एयर अबाउट त्रिवेंद्रम, फॉर एग्जांपल आप प्लेन में बैठ के एक दो ऊपर चले जाएं अबाउट 30,000 फीट, और ऊपर से जब नीचे त्रिवेंद्रम देखेंगे, तो कितने किस्म के फूड की धाराएं आपको त्रिवेंद्रम में दिखती हैं? किस किस तरह के फूड वहां दिखते हैं आपको? So, if you have to talk to you about the hyperlocal food in Trivandrum, it's still untouched. लोग ओके। मतलब लोग अभी भी इतना अभी ट्रिवांड्रम की जो पॉपुलैरिटी अभी बढ़ी है, it was a हाँ very untouched place a very long time ago. हाँ। It was because either Trivandrum and all, when we started, there was nothing in Trivandrum. There was only हम्म hyperlocal. That हम्म। still remains untouched. So if we look at it, Trivandrum has a lot of Tamil Brahmin communities ओके। because कन्याकुमारी के बहुत क्लोज हैं, तमिलनाडु के बहुत क्लोज हैं, यस और यस। if we go and look at history, we were actually Tiruvidangur, the old Maharajas, the Padmanabha Swami temple, it connects to Padmanabha Swami temple. The Tiruvidangur had, like, we had given up Kanyakumari and taken Palakkad in the north. So it was like an ओके। exchange when the Kerala formation happened. So we were actually, we have a mix of Tamil influence a lot in Kerala, in Trivandrum in particular. या So you'll see a या। lot of Tamil food also. So that is very prominent. So you go near the Padmanabha Swami temple area, you'll see a lot of Tamil and Malayalam cuisine connecting, and it's a यस beautiful amalgamation. And now, because a lot of it's all over Kerala, not only in Trivandrum, that there's a lot of Arab influence in food. So या because we are, most of us Malayalis were in the Gulf for a very long time. या। Most of them, when they came back and settled, there's a lot of Arab Kerala influence. So now it's more like Kerala cuisine only. It's not even considered foreign. So या alfaham, shawaya, shawarma, it's part of Kerala cuisine now. So या। that's there. There's the Tamil food. There's now, because a lot of northeastern side migrants, labor coming in, वाओ। there's a lot of momo culture in Kerala also, suddenly in Trivandrum या also, because there's a lot of people living there. They bring their own food with या। them. So that's the part of our Indian culture also, I feel. We take our khana everywhere. So that's also being seen. And now हाँ। North Kerala snacks are also very popular in Trivandrum. हम्म। But along with Trivandrum food that I said, a mix of Tamil food. So these are the very, very prominent ones you see in Trivandrum. ब्रॉड ब्रॉड स्ट्रीम्स। Yeah. ओके। आपने त्रिवेंद्रम में वेरियस स्ट्रीम्स की बात करी, अंजना, कुछ ऐसी डिशेस हैं जो केवल त्रिवेंद्रम में ही ओरिजिनेट हुई हैं? हाँ, सो वी कैन इजीली से कि कुछ यूनिक डिशेस हैं जो इवन केरला में जो लोग रहते हैं उनको नहीं पता कि त्रिवेंद्रम में ऐसा मिलता है. तो ओके। डेफिनेटली पॉपुलर जो है अमंग स्ट्रीट फूड, दैट इज त्रिवेंद्रम स्टाइल चिकन फ्राई. अभी आप मुझे नहीं पता आप गए होंगे कि नहीं, कप्पा चक्का कांदारी बोल के यस शिवजी में एक रेस्टोरेंट, यस। हाँ। वहां पे भी मेन्यू में आपको मिलेगा त्रिवेंद्रम स्टाइल चिकन फ्राई. ओ। क्योंकि यहाँ चिकन फ्राई है, बहुत मशहूर है, बहुत पॉपुलर है, बहुत यूनिक है. ड्राई रेड ओके। चिली को क्रश करके बहुत रेड, फियरी रेड में मिलेगा, बहुत स्पाइसी रहता है. हाँ तो दैट्स अ वेरी ट्रिवेंड्रम थिंग. मटन हाँ। बहुत पॉपुलर है ट्रिवेंड्रम में. मटन, इतना अच्छा मटन मिलता है कि मटन का जो ड्राई रोस्ट ग्रेवी रहती है वो बहुत पॉपुलर है. वेरी गुड। उसके अलावा जो मैंने आपको बोला था तमिल कल्चर, उसमें थोड़े यूनिक डिशेस हैं. तो हाँ। तमिलनाडु में आप लो, एक अड़ा डोसा बोल के एक डोसा है जिसमें ड्राई रेड चिलीज, गार्लिक सब कुछ मिक्स करके बैटर बनता है, तो थोड़ा सा ओके रेड कलर दिखेगा. ओके। तो अवियल जो है केरला में बहुत मशहूर है, तो वो हाँ। एक क्लासिक कॉम्बिनेशन आपको त्रिवेंद्रम में मिलेगा. सो यूजुअली आपको डोसा के साथ क्या मिलेगा, सांबार, चटनी, वो सब. हम्म। त्रिवेंद्रम में अगर आओगे आप, अगर अड़ा डोसा पूछोगे तो अड़ा डोसे के साथ अवियल मिलेगा आपको. ओ। अड़ा अवियल इज अ वेरी क्लासिक कॉम्बिनेशन. वाह। और इडियप्पम, आप जानते हो इडियप्पम? या इडियप्पम इडियप्पम। का इडियप्पम का एक तमिल वर्जन होता है सेवा. हाँ डिफरेंस क्या होता है कि इडियप्पम हम जो मतलब वो डो बनाते हैं, फिर हाँ। प्रेस करके स्टीम करते हैं. हाँ सेवा जी। को जो होता है वो डो बना के स्टीम करके प्रेस करते हैं, तो उसका ओ। शेप नहीं रहता है, ऐसा फुल नूडल नूडल जैसा रहता है. हाँ उसके हाँ साथ एक दही और कोकोनट की करी मिलती है, हाँ। पुलिशेरी करी. ये सिर्फ हाँ। आपको ट्रिवांड्रम में मिलेगा. सेवा, वाह। पुलिशेरी, आडा अवियल, वो सब यहाँ पे आप बहुत मशहूर है. और परिप वड़ा, लेंटिल फ्रिटर्स जो रहते हैं, परिप वड़ा, हाँ उसको हाँ। रसम में डुबो के सोक करके आपको डोसा के साथ मिलेगा. मतलब रसम. आप स्टार्टेड सलिवाइटिंग, बिकॉज जिस तरह से आपने मुझे बता दिया है, अंडा अवियल तो अपने आप में एक चीज है, देन आप चिकन फ्राई जो आप मेरे को बता रहे हैं, और अभी ये जो हाँ जी. आपने लेंटिल्स के फ्रिटर्स बताए हैं, दैट्स यस अगेन अ वेरी ग्रेट थिंग। यस. और अनिल कुमार सर जो बोल रहे हैं वो डिश नेम बोली,
आपने खाई हाँ, होगी पूरन पोली और होलीगे, सेम उसका वाह! कजिन है। वो भी यहाँ वाह! पे बहुत मशहूर है। त्रिवेंद्रम वाह! में लोग आते हैं, ये सिर्फ ये खाने के लिए भी आ जाते हैं। वाह! अच्छा, अब ये बताएं, हमने पिछले एपिसोड में भी पार्वती से बात किया था केरला थाली के बारे में। अब मुझे सद्या। बताएं, केरला थाली इन जनरल में क्या होता है, जो हाउस होल्ड, नॉट कमर्शियल थाली, और क्या ओके त्रिवेंद्रम में थाली जो है वो कुछ डिफरेंट है रेस्ट ऑफ केरला से, जो घरों में थाली खाए? ओके, तो थाली जैसी कॉन्सेप्ट नहीं रहती हमारी, तो हमारे जो रहता है फिश करी मील्स रहता है, नहीं तो वेज या, मील्स। तो या, तो घर में अगर आप ट्रिवेंड्रम में आओ या फिर केरला में कहीं भी आओ, केरला कैन बी ब्रॉडली सेपरेटेड इनटू 3 फूड कैटेगरी ब्रॉडली, बट या, इंडिया इज वेरी डिफिकल्ट टू कैटेगराइज इनटू, बट इफ आई हैड टू एक्सप्लेन, नॉर्थ केरला, सेंट्रल केरला, साउथ केरला। आपने जो या, तालशेरी गर्ल के साथ किया था, नॉर्थ केरला या, था, वेरी डिफरेंट कल्चर एंड क्विजीन। या, सेंट्रल केरला में वेरी सीरियन क्रिश्चियन फिश करी, आलपी जो एरिया रहता है, कोटयम एरिया जो रहता है, वहां पे बहुत डिफरेंट क्विजीन रहता है, बहुत एंग्लो सीरियन क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस। And या, South Kerala is where you come for the Tamil influence, a little bit of Tamil border influence. Now, if you come to Trivandrum and you try to ask for meals, usually, if you come to the coastal region, every house has fish. Fish to फिश, fish के बिना तो चलेगा नहीं. But if you go to फिश के vegetarian house, हाँ, for a vegetarian household like North India, we'll have some kind of dal. So ओके, हमारे यहाँ पे, मैं बिकॉज नॉन वेजिटेरियन हूँ, हमारे घर पे ना हर दिन फिश बनता है, मतलब फिश तो स्टेपल है, फिश यस, वहां पे मिलेगी, और बाकी करें उसकी मतलब that will be cooked according to what is available. या, या, Sustainability is heavy in Kerala, so it's not like we cook anything very fancy. We usually see what's available during the season, and Ayurveda has a huge influence in Kerala food. तो अगर rainy season रहेगा तो moringa drumsticks, we don't use the drumstick leaf for the medicine because of the medicinal reasons, because toxins zyada रहते हैं ऐसा. So even if you go outside and you see moringa, that is moringa leaf being cooked in rainy season, even if people don't know why, they'll be like, oh, why did you cook it? It's a part that we convey it. So in households, if you look at it, it's usually one rice, which is the red rice or white rice, not the Tamil Nadu style rice, the fat ones. You'll दैट either वन, have those, you'll have fish curry, there'll be usually fish fry or some kind of vegetarian curry like dal, or in our style, in Kerala style, with coconut oil and tadka. We'll have some kind of vegetable which is usually seasonal. Some houses, rich households, will have two vegetables. ओके, Uh, and there'll be some kind of pickle. That's for sure. Papad. Not the, no, we don't, we fry it in oil. Papad, there'll be papad. Usually, most of the houses you'll find papadam. Papadam will be the staple. या, So, this is a very traditional Kerala style meal. And if you go to south of Kerala, you will find more of a coconut based fish curry. Central Kerala, you'll find more of a not at all coconut based, the red curry with वाह, Malabar tamarind. And in south, where I'm from, Trivandrum, we don't use Malabar tamarind at all. It's ओके, another kind of tamarind. So yeah, this is what you get in homes. If you go to होम्स, restaurant, it's usually हाँ, very staple around all over Kerala. There's rice, there's 2, 3 types of veg curry, there's sambar, there's dal, pickle, maybe some ginger pickle, pappadam, and some kind of coconut chutney. This is classic. This is how it वाह. usually looks. Now that reminds me, day before yesterday, I went to a Malabar restaurant and I had that Isla fry, Oh yeah, and I loved it, yes, I love it too. along with some mutton stew and some Yum, biryani. Amazing. yum. ओके, आप मुझे बताएं कि केरला में कितने किस्म की बिरयानी अवेलेबल है, और त्रिवेंद्रम की क्या कोई खास बिरयानी है? So it's a very debated topic. But if you can divide Kerala into two and create a huge ruckus of fight, it can be easily based on biryani. And if anyone hates Trivandrum for anything, it's because of our biryani. Hmm. But being a Trivandrum person, I'll say that I love the Trivandrum biryani. Okay, so biryani, the most popular one is definitely Talasheri biryani. That हाँ. is unique in its own way. It's beautiful, it's mildly spiced, it's served with coconut chutney and dates pickle. So it's a Oh, very, yeah, it's a very mild biryani.
but the dates pickle adds that sweetness, and the coconut chutney is rough coconut with mint and green chili. So there's a light kick and a freshness. So it all Now, comes together. dates pickle is something new for me. I haven't tried it. No. Kerala, like Mr. Anil saying, Kerala pickle scene is something else. There's non-veg, veg, uh, Uh, sweet and sour, lime, different kinds of lime. It's another topic we can open up. I can teach on pickles for like 3-4 hours. oh, wow, wow, wow. So Talasheri biryani is definitely very popular. Uh, Um, and even Talasheri, like if you go to Kannur, the Talasheri biryani also changes a little bit and becomes Kannur biryani. uh, It's a little different. Some tweaks, certain masalas are different. Rice hmm, gets different. So Talasheri biryani uses a very particular kind of rice called kaima. It's uh, very yeah. small rice. But if you come down south to Trivandrum, we use long grain rice, not basmati, but long grain rice, like the North Hmm, Indian Delhi style biryani. And it's hmm. more masaledar. It's like more of a chicken roast and rice together. But the Listen, you my friend Anil Kumar has promised me that he will get me a pickle and date pickle. Thank you, Anil. I look forward to it. Thank perfect. you very much. I look forward to that date pickle because now I'm caught on to pickles. Yes, absolutely. Huh. Uh, and in Trivandrum, the unique factor which is heavily debated is Hmm. that we have pineapple in our biryani. So it's like the Hawaiian pizza. It's like you love it or you hate it. There's no in between. Acha, So let me tell you, I like pineapple, so I I would love want to try. I would like to try pineapple biryani then. प्लीज डू आई एम इनवाइटिंग यू टू ट्रिवांड्रम सर जस्ट आप खुले मन से आ जाओ पूरा मेरे पक्का, ऊपर है आपको मतलब फुट वॉक डन। एक वाह, वाइल्ड मंजूर है। आना ही पड़ेगा। यस एब्सोल्युटली तो ट्रिवांड्रम हैज पाइनएप्पल इवन कोल्लम हैज पाइनएप्पल सो people like it to hate it. ओके। अच्छा, अभी अगर मैं पद्मनाभन स्वामी टेम्पल की बात नहीं करूंगा तो मुझे लगता है कि आई विल बी फेलिंग इन माय ड्यूटी। तो मुझे ये बताएं कि जो पद्मनाभन स्वामी टेम्पल है, इसकी एक अपने सिग्निफिकेंस है। हाँ वहां जी पे आई एम श्योर कम्युनिटी किचन भी होगा जहां वो प्रसाद देते होंगे। तो वो हाँ जी कम्युनिटी किचन में नॉर्मली क्या मिलता है? So before I tell you about the community kitchen, I have to tell you a little bit about Padmanabha Swami Temple. यस, It's my यस। duty to say it coming from Trivandrum. This is a favorite part of my lesson that I give people whoever come here. I'm like a tourist guide. So Padmanabha Swami Temple is a very iconic place. The people now know it as a world's richest temple. यस, Like there यस। are so many unique things to that temple, and it's very beautiful. So हम्म, Martanda Varma is the king who ruled Tiruvidangur region. It's a bit of हम्म, history if you're interested, who ruled the Tiruvidangur region. And there's also a story of Avial, how Avial came from Martanda Varma's community kitchen, where ओके। it was being cooked in the Padmanabha Swami Temple's community kitchen. It's a very mythological story that हम्म, there was a feast going on and Martanda Varma, him giving it to all of his countrymen. हम्म, And they ran out of dishes for the sadhya. So there were a lot of vegetables left over, so हम्म, he asked the kitchen, like the head of the kitchen, to make something. So he put हम्म, all the vegetables together, put some coconut paste, added yogurt, and it became avial. That's one हम्म, of the very mythological stories we have. हाँ, So Padmanabha Swami Temple was actually built by Martanda Varma. For हम्म, he was considered the Padmanabha Dasa. That is ओके, the या, Dasa of Lord Vishnu. गॉट, या, It's a very small temple. And Martanda Varma, being a very cunning king, he used to he used to plunder and get a lot of gold and wealth. या, Finally, he realized in life, this is the story that he realized in life that it's no more of him to do all of this. So he gives up. He keeps the sword in front of Lord Padmanabha and gives up his हम्म, fight. He gives all his wealth to Lord Padmanabha. Those are the three doors that you find in Padmanabha Swami Temple, where three uh, closed shut doors which were opened recently. Two of them were opened, and it हम्म, became the world's richest temple. One door is still not opened. There's a lot of conspiracy behind it. There's a lot of stories. So if you come to Trivandrum, you'll hear all those ghostly, creepy stories, also some mythological ones. So after it became the world's richest temple, the temple is way more strict than before. You can't enter. There's a lot of norms, strict guidelines. हम्म, But ever या, since Nabha Swami has been there, the हम्म, prasadam or the prasad has been unniyappam and हम्म, palpayasam. Like there's always been
Unniyappam and pal payasam. So when you go over the counter, you can just Hmm. pay for the prasada and you can get Okay. unniyappam, which is the small one. So there is inside Padmanabha Swami temple, there is a Ganapati Pradishta where you can Hmm. go Agrashala Ganapati. So Agrashala, that was the granary for the Padmanabha Swami's time. I mean, sorry, Okay. Martanda Varma's time. So when you go Uh-huh. inside the temple, you can start smelling the jaggery being reduced with Oh, the coconut to make this. So instantly you will feel hungry. So yeah. you'll driven to go stand in the long queue for the over the counter prasada. So that's been there. There's also Uh, some naivedyam given to the Lord, which is made of rice flour and jaggery and poha and all of this. mhm. So depending on which counter you buy it from, all these prasadams are given. But unlike other temples like Guruvayur or this thing, we don't have an elaborate sadhya or anything Okay. served Okay. at Padmanabha Swami temple. It's all Right. these Right. over the counter ones you can buy and leave. There's no Hmm. elaborate meals like Langar or Guruvayur, any of these Hmm. places. So before we move on to specifics of tea, breakfast, and lunch, and I have two quick questions. Okay. General one. First, tell me what is the, since you said that Tamil influence on south of in Trivandrum being south of Kerala and all that, sambar in Trivandrum, is it different than rest of Kerala? What's that difference? So all over Kerala, sambar is very different. Yeah. Sambar is very different from the rest of South India also. So if we can easily say by the liking of sambar, you can segregate people. Okay. So you go to Udupi, you get a very sweet sambar. Karnataka has that jaggery addition to sambar. It's more watery. If you go to Yes. Yes. Bangalore, you find a more watery sambar. When you come to Kerala, if you go to the north of Kerala, you will. So I'll tell you some common characteristics of the sambar Huh. in Kerala. Some common characteristics is it's not a very red color like the ones you find in the rest of South India. It's very more reddish brown color for the sambar Mhm. and heavy on dal. So it's more Okay. of like dal for us, for the Okay. dal of South India. So it's heavy on dal and it's thick with a Hmm. lot of vegetables. You'll find potato, you'll find carrot, you'll find drumsticks, you'll find tomato, all of these Yeah. vegetables go into sambar. Yeah. And it's thick, it's more dal influence and brownish red. Now, how does Right. it change between Trivandrum and North Kerala? Is North Hmm. Kerala, you will get a coconutty taste because you dry roast coconut with dry red chilies and spices, whole spices, Yeah. and then you add that paste to sambar. But if you come to Okay. Trivandrum, that's not existent. It's just you Okay. boil dal, you make your sambar masala, you add it, tamarind, done. No Done. coconut. Okay. So And in yeah, Trivandrum, coconut. this sambar again, as you said in rest of Kerala, it is slightly thicker. Yeah, absolutely. Sambar is usually thicker, and in Trivandrum, if you come, the sambar has a little more tamarind than Okay. the like the North India. So because again, Tamil influence, a lot of tamarind influence, so you'll find a little more tamarind in Trivandrum. That's it. Hmm. Anil Kumar is saying every district had its sambar variant, and Mickey Bhai is saying sambar has as many variations as biryani. Wow. Absolutely, yeah, it does. Okay. अंजना ये बताएं, एक बड़ा बड़ा फेवरेट टॉपिक है केरला के बारे में, एंड आई एम वेरी इंट्रीग्ड बाय दैट, एंड दैट दोज आर टॉडी शॉप्स. Yeah. है टॉडी शॉप्स, क्योंकि आपने जो कप्पा चक्का कंधारी का जिक्र किया, वो शेफ वो जो शेफ थे वो बहुत जाके टॉडी शॉप में बैठ के रेसिपीज वहां से लेके आए और उसी को उन्होंने वहां पे कप्पा चक्का कंधारी में. तो टॉडी शॉप्स की सिग्निफिकेंस और वहां खाने में क्या क्या मिलता है? Toddy shops are like an emotion for any Kerala. हम हमारे जो टॉडी शॉप्स रहते हैं बहुत छोटे से रहते हैं. अभी क्या होता है कि टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करने के लिए और फैमिलीज को भी अट्रैक्ट करने के लिए फैमिली रूम्स भी बनते हैं टॉडी शॉप्स में. तो या अगर if toddy shops start as small toddy shops, when they make money they expand and they become fancy ones also these days. ओके. So um so toddy is basically it's a fermented drink from the coconut sap, as you know. So there are two types of toddy also. The fresh ones which you take instantly, which is more sweeter. It doesn't give you that kick or anything. Statutory warning, do not drink and drive. And if you wait out the toddy till evening, and the color, we call it color. So it's called color. So if you wait till evening, and you can go to the toddy shop and ask according to your preference. Do you ओके. have the ones that are like andikal ondo? Do you have the other one? You can ask. So the fermented ones usually have a beer alcohol percentage of like 5 to 6%, like a mild beer. So because it has that like
sour taste and has a kick to it. You Yeah. need really spicy food to complement it, just like Okay. alcohol. So if Yeah. you go to a toddy shop to eat, please do not expect vegetarian food. You will get a Yes. non-vegetarian fare. Like you Okay. can eat from any kind of meat. Like so, fish is a very big part of toddy shops. You will find tapioca, you will find rice, fish, different parts of fish. You will even have curries which are made only of fish head. Hmm. It's very popular in toddy shops here. You will find Yeah. meat like buff. You will have mutton. You will have rabbit. It's a Wow. disclaimer, sorry, but all kinds of meat and very spicy, Hmm. very Hmm. very spicy that you will need a sip of toddy to bring it down. So it's Great. marketing on its own. The more you drink, the more you eat. The more you eat, the more you drink. You drink. Great. Yeah. So you So get actually you get caught in the vicious circle. yes, if you want to know the pulse of Kerala, you have to go to the local toddy shops. But if Yeah. you're Yeah. coming with a lot of people and you want to sit down, enjoy with your friends, I would suggest the modern toddy shops with the Okay. family. Okay. Okay, let's come to this segment where we talk of specifics. एंड Okay. मुझे बहुत खुशी है जब आपने बोला कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ट्रिवेंड्रम के खाने के बारे में बात करने वाला है तो बात करते हैं अब ट्रिवेंड्रम की अगर जैसे मेरे जैसा आदमी या कोई भी लोकल ट्रिवेंड्रम के लोग शुरुआत करते हैं सुबह सुबह की चाय से एंड आई एम श्योर केरला बीइंग पीपल आर नॉट कॉफी पीपल आई एम अ कॉफी पर्सन बट यस इन केरला पीपल आर मोर ऑफ टी पर्सन तो ये बताएं सुबह सुबह आपके हिसाब से 5 to 7 प्लेसेस कौन सी हैं चाय की जो आप रिकमेंड करेंगे अर्ली मॉर्निंग आप जाएं चाय का थोड़ा गप्पाजी करें और बैठ के कुछ चाय पिए उसके साथ के कुछ खाएं तो क्या क्या जगह है ट्रिवेंड्रम में Done. But before I say that, I'd like to give you a happy news. Ki हाँ, Kerala is equally popular for coffee and tea. So हम्म the thing is, if you go to hilly areas in Kerala, like Idiki, all those places, because of the intense amount of coffee plantations, and because we even have a GI tag for Wayanad and Robusta. That's a या specific kind of coffee that comes from there. So if you go to those two places, you'll be a very happy person. इतना coffee मिलेगा आपको और आई टेल अच्छी यू the company which I work for have an office in Cochin Okay. कोची एंड आई वाज सरप्राइज्ड बिकॉज़ जब मैं पहली बार गया था आज से 10 साल पहले आई एक्चुअली बैंग्ड माय हेड मैं कहा यार फ़िल्टर कॉफ़ी कहाँ मिलेगा? वो बोलते हैं फ़िल्टर कॉफ़ी तो मिलना मुश्किल है। You have to come to Trivandrum filter coffee यस, के लिए. यस, Trivandrum यस। आओगे तो all Tamil Brahmin houses filter coffee is a must. You'll smell the coffee, and then we walk by Padmanabha Swami temple in Trivandrum. All the houses will smell like fresh flowers because of the वाओ! evening puja and filter coffee. So वाओ! that's the smell of the houses here. But तो because you asked me चलिए about बात tea, करें टी शॉप्स की आई थिंक वहाँ पे टी शॉप्स को कुछ जो लोकल स्टॉल्स है उसको टट्टागोड़ा भी बोलते हैं। टट्टागोड़ा chai kada, chai kada, चाय yeah, कड़ा या yeah, तो आप chai kada. बताएँ मेरे को चाय कड़ा कौन-कौन से अच्छे हैं त्रिवेंद्रम में जाके सुबह जाके चाय पिया जाए? अरे so if you Trivandrum में आओगे ना तो like you'll walk around, you'll bump into a चाय कड़ा every 10 meters. हर जगह पे चाय कड़ा मिलेगा आपको तो हाँ, उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे तो हाँ, इवन नॉट ओनली द ओल्ड पीपल यूथ भी चाय कड़ा को इतना पसंद करते हैं कि पूरा हैंग आउट स्पॉट रहता है हमारा चाय कड़ा जो रहता है ना हाँ, हाँ। वहीं पे मिलेंगे दोस्त शाम को काम के बाद तो चलिए आप बताएं आपके कौन से फेवरेट चाय कड़ा है बहुत सारे हैं तो मॉर्निंग अगर जाओगे तो यहाँ पे कवड़ियार एरिया में अगर किसी को नोट करना है तो कवड़ियार कोरंगोण गोल्ड फ्लिंक्स के ऑपोजिट गीतांजलि बोल के एक टी शॉप है गीतांजलि वाह तमिल हम्म लोग चलाते हैं लेकिन बढ़िया चाय मिलती है और सुबह जाओगे तो चाय के साथ नेई रोस्ट घी रोस्ट और वड़ा मेदू वड़ा सब कुछ मिल मिल जाएगा तो सुबह वाह 6 बजे से मिलेगा गीतांजलि हम्म सुबह से खुला रहेगा तो गीतांजलि है गुड मॉर्निंग होटल जो है वहां पे ब्रेकफास्ट मिलता है 8 AM से 11 AM तक वो मैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे आंसर करूंगी वहां पे ओके लेकिन एक स्पेसिफिक टाइप की टी मिलती है अच्छा ब्लैक टी जिंजर और मिंट डाल के तो ओके वो जगह तो एकदम फेवरेट और मॉर्निंग अगर जाओगे तो अगर इफ यू गो नियर द टेम्पल एरियाज यू विल फाइंड अ हाँ लॉट ऑफ स्मॉल स्मॉल वंस विदाउट नेम्स हाँ no name, but you go to any chai kada, you'll हम्म love it. You can just give हम्म your specifications like strong tea, less sugar, black tea, with mint, without mint, with ginger, and they'll make it for you. हाँ हाँ So Padmanabha Swami temple area for sure. हाँ हाँ So these और are कौन some of से the अच्छा open in morning, but हम्म evening if you go, there are so many options. There are these new brands coming out. There are like franchisees. One is called Chai Bogi.
So Okay. there's one in Kavadiyar, there's one in Karakutam on the bypass road. You can easily Mhm. spot them. It's a fancy as bogie like that, and then with full lights in green and Wow. white. You find it in Vellaямbalam area also. So Mm. Vellaямbalam, Shastamangalam stretch, you can find chai bogie. Then there's Booster Chaya. These are all franchisee model. They Yeah. dot the city. So they're all over the place. So you will never feel like there's no place for chaya in Trivandrum. So Okay. just everywhere. चलिए, आप बताएं ब्रेकफास्ट की बात कि हमारे जैसे आदमी को ब्रेकफास्ट। अच्छा, मैं भूल गया था एक्चुअली, मेरे को पिछली बार भी मैंने बहुत जिक्र किया, अनिल भाई ने याद करा दिया। सुलेमानी चाय, आई टेस्टेड सुलेमानी चाय इन बॉम्बे, मुंबई। Oh, wow. तो मैंने सुना कि केरला में सुलेमानी चाय बहुत एकदम पॉपुलर है। Ekdam. So when you come to South, Sulaimani is not popular. So in north of Kerala, Sulaimani is very popular. हमारे यहाँ पे जो होता है, so हम्म। Kerala में black tea is very popular. It's also ओके। part of our politics. So the whole ओके। communism and black tea is like the labor's drink. Like cutting chai ओके। for Mumbai, हमारे लिए black tea ज्यादा चलती है. तो ब्लैक टी में अगर वेरिएशंस चाहिए तो आपको मिलेगा मिंट डाल के, अदरक मार के, ऐसा ऐसा. और या। if you Sulaimani is very popular in the north of Kerala. It's mostly lime tea or just plain black tea towards the south. And we usually drink in Trivandrum and all. It's mostly black tea. I mean, it's mostly milk tea, strong milk tea, and not black tea. चलिए, ब्रेकफास्ट की बात करें, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, बढ़िया-बढ़िया ब्रेकफास्ट ट्रिवेंड्रम में कहाँ-कहाँ मिलेगा, कहाँ जाना चाहिए? So 2-3 places that are very popular. अगर आप ट्रिवांड्रम आओगे तो one is for sure puttu and but not kadala. You will हाँ। get puttu and chicken perit. So chicken ओके। perit is dry chicken curry cooked on a very slow flame overnight to make it very ओह! reduced. And the हुँ। interesting fact that we use pandan leaves for it. We call हुँ, it हुँ। Ramadelia. So the very Thai influence, but yeah, it या। brings a very sweet flavor. So we have हाँ। pandan leaves in it, and that is in a place called Krishna Hotel, Kattachilkudi. It's very famous. That's how it's known ओह! also. Krishna Hotel, ओह! Kattachilkudi, and famous for puttu and chicken perit. राइट। Then, if you're looking at Porota and Buff, again, Good हाँ, Morning Hotel. It's हाँ। only open, it's like its name, it's only open for breakfast. Good morning, 8 a.m. to 11 a.m. ओके। There's no menu. It's only हुँ, porota, buff, pappadam, some onions, and that हुँ। mint and ginger black tea. टी, वॉव! People who are gluten intolerant, you can check out idiyappam. They have idiyappam also, but the same gravy. So हुँ, they use brisket and then they cut it, like cook it down overnight in a huge iron kadhai. So it हुँ, becomes very caramelized and yummy. हुँ। And very limited seating also. So you either have to take parcel or go rush in and sit there and eat. वॉव! Vegetarian, Trivandrum is a heaven, like for vegetarian people, because again, if you go near Padmanabha Swami Temple, there's a small restaurant called Gauri Shankar, run by गौरी। a mom and a son. This is ओके। the place you get in the morning. You'll get adai avial, you'll get seva pulisheri, you'll हुँ, get plain dosa with chutney and sambar, and filter हुँ। coffee. ओके, And ग्रेट। this is right outside Padmanabha Swami Temple, on the same road of Padmanabha Swami Temple. ओके, ओके। Gauri. And where our railway station is, that is the hub of all the transportation. There's a hotel, I mean, it's a restaurant called Arya Nivas, which is a little fine place. Like you can go with family, get down AC rooms, but हुँ, their ghee roast, dosa, paper roast dosa, हुँ। all of that is very yum. ओके, Yes. वॉव! सो ब्रेकफास्ट इसमें नॉन वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट आपने एक जगह बताया, कुछ और जगह भी है जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट मिलता है या मोस्टली इट इज़ ऑल वेज ब्रेकफास्ट इन ट्रिवेंड्रम? नो, मोस्टली इट्स नॉन-वेज. फिश करी ओके। सुबह-सुबह से मिल जाएगी आपको. हुँ, सुबह जाओगे तो ऐसा ऑप्शन मिलेगा. अगर छोटे रेस्टोरेंट्स में जाओगे तो वो बोलेंगे ठीक है अप्पम है, हुँ। इडियप्पम है, डोसा. लेकिन वो अगर आप ऐसे छोटे रेस्टोरेंट्स में जाओगे तो बड़ा डोसा नहीं मिलेगा. हाँ, इतना सा स्मॉल। छोटा थिक डोसा मिलेगा. और डोसा डजंट कम मैंडेटरली विद सांभर और चटनी. Usually या। you don't find sambar or chutney हाँ, in small places. They'll ask you, okay, what curry do you want? And then they'll हाँ। start saying, okay, there's egg curry, there's हुँ, onion gravy, there's हुँ, kadala curry, that is the chickpea, then there's हुँ। buff, there's chicken, there's fish curry. So you will find the fish curry even in the morning. ओके। So, और ब्रेकफास्ट में पुट्टू एंड काडला कड़ी भी खाते हैं? Hanji, puttu kadla, but not that
popular. Puttu usually goes with chicken here or fish Okay. curry. kadla Okay. curry यूजुअली घर पे खाई जाती है, तो हमारे यहाँ पे घर पे बनती है kadla curry. रेस्टोरेंट्स में जाओगे तो आपको ज्यादा नॉनवेज मिलेगा. नॉन वेज. चलिए अब लंच एंड डिनर की बात करें कि अगर आपको जाना हो और व्हिच आर द 5-7 प्लेसेस यू विल रिकमेंड आवर व्यूअर्स के अगर ट्रिवेंड्रम में है तो वेज नॉन वेज के लिए लंच डिनर में कहाँ जाना चाहिए? वेजिटेरियन लंच तो आई विल अगेन सजेस्ट आर्या निवास तंबानूर में, और आर्यास जो अनिल कुमार सर बोल रहे हैं ना, आर्यास वो, लेकिन सॉरी अरुणा, अरुणा इन पाळयम. दीज टू ओके. प्लेसेस फॉर वेज लंच एब्सोल्युटली. और सद्या जानते हो ना आप? सद्या, सद्या या जो इलेबरेट मील होते हैं ट्रिवेंड्रम बनाना में. लीफ. हाँ एग्जैक्टली. सो 26 डिशेस. ट्रिवेंड्रम में एक जगह है जो लोग मतलब बाहर से भी आते हैं सद्या खाने. 365 डेज आपको सद्या मिलेगा, और वो है मदर्स वेज प्लाजा, बेकरी And you जंक्शन. said and you said 26 dishes in that. Almost 26, all of that full elaborate sadhya every day. You can even Okay. order on Zomato and Swiggy, like if you don't have place to sit, and they'll give you to you with the banana leaf. They'll deliver it to you Okay. with the banana leaf. And you All of said these. Mother's Veg Paradise. plaza, Veg plaza. Veg Plaza. Mother's Veg Plaza. Okay. Ji, bakery junction. So vegetarian haven for that. For fish is very popular. So you will find restaurants serving a range of fish. So there's a restaurant called Pangayam in it's at two places, Palayam and Medical College. वहां पे अगर जाओगे तो आप पूछ सकते हो कि मुझे मील्स चाहिए, और फिश कैसे ऑर्डर करते हैं. They'll bring a full tray with different kinds of fish fry. तो Okay. प्रॉन्स मतलब आपने बोला जो मैक्रेल, आयला फ्राई, you will find kaimini, pearl spot, you will find sear fish, you'll find tuna, all of these, and they'll just bring, and you can look what looks interesting and just take it. And they'll bill it to you accordingly. So that's there. Then tuna is a very popular fish in Trivandrum. Okay. So yeah. So most of the little restaurants, there's a restaurant called Devi in Kaidamukka, where you get kanji, the congee, the kanji, coconut chutney, tuna fry, and green gram toran with coconut, sauteed with coconut for lunch with papad. Interesting. Very Yeah. interesting. That's a very local. मिकी भाई पूछ रहे हैं मेडिसन स्ट्रीट इज इट ओपन फॉर लंच? Madison Street is, but you don't get local food. They're more of a continental cafe sort of place. They are open for lunch and dinner. Yeah, but they don't serve lunch per se with meals or any local food. They're more like a cafe, like a hangout spot. अच्छा, ट्रिवेंड्रम में स्ट्रीट फूड का क्या सीन है? What all you get in street food and where all? Okay, so very popular street food in Trivandrum is called Tattu Kada. So it's like those little small shops, like once you find on the streets. But the very popular two main items you get in Tattu Kada is that those small dosha, and you'll get small dosha or parota, the Malabar parota, small ones. For dosha, you have option of, there's a coconut chutney which is very thin. So you get that coconut chutney, and then there's a red color, very spicy chutney made with red chilies. So crushed red chilies with coconut oil and a little bit of water and salt. That, papad, and egg omelette. So that's a very classic thing here. And rasavada I told you about. So you'll see small shops, they will have big bartan full of rasam. उसमें वो परिपोड़ा डुबो के रखते हैं, और जब पूछते हैं तो मतलब लेके देते हैं. इट्स वेरी फास्ट मूविंग. तो जाओ, कितना डोसा चाहिए, टिक टिक टिक, करी मिलेगी, सांभर मिलेगा. अगर नॉन वेज चाहिए तो बफ भी रहेगा, चिकन फ्राई भी रहेगी. तो ये और या फिर आइदर डोसा और परोटा. ओके. दिस इज क्लासिक स्ट्रीट फूड. सो ये स्ट्रीट फूड में स्नैक्स में भी ट्रिवेंड्रम में लोग यही खाते हैं? स्नैक्स में यूजुअली ये चाय कड़ा चले जाते हैं हम लोग. सो चाय कड़ा में क्लासिक आइकॉनिक सीन जो रहती है, तो चाय बनी रहेगी मतलब एक जगह पे, और एक वो ग्लास केस में पूरा स्नैक बना के रखा रहेगा. सो देयर विल बी मेदू वड़ा, देयर विल बी दिस लेंटिल फ्रिटर्स, देयर विल बी कटलेट. देयर आर दीस ट्रेडिशनल स्नैक्स एंड मॉडर्न स्नैक्स. सो ट्रेडिशनल स्नैक्स में वो मेदू वड़ा आएगा, पड़म पुरी, वाड़े किचन कॉल्ड वाड़े अप्पम, द बनाना फ्रिटर्स, तो रॉ बनाना फ्रिटर्स, ब्रिंजॉल फ्रिटर्स, potato fritters. There's so many options. Brinjal fritters is love. Yes, brinjal fritters. Kerala banana fritters तो मतलब it's synonymous.
Yes, very. So you'll find all of that and modern snacks like bread packet. So bread के अंदर चिकन और मेयोनीज का फिलिंग रख के फ्राई हम्म करके ऐसा हम्म पैकेट रहेगा, कटलेट जैसा दिखेगा लेकिन अंदर कटलेट नहीं रहेगा. सो समोसा, केरला हम्म स्टाइल समोसा, नॉर्थ इंडियन स्टाइल नहीं, थिन हम्म फ्लेकी, उसमें अंदर आलू और पीस, but हम्म not the North Indian masala. Some carrot also will be there. That not other available. So those are also street food and shawarma now. Very much a part of street food. Every 100 वाह meter. One दैट्स shawarma. व्हाई यू इन द बिगिनिंग यू आल्सो सेड कि मिडिल ईस्टर्न का काफी, क्योंकि Yeah. बहुत सारे लोग गल्फ में गए थे तो वहां से बहुत सारा खाना यहाँ पे लेके आए, तो वो भी अब पार्ट ऑफ केरला हाँ क्विजीन जी. है। तो फूड ट्रक ज्यादा ये ही सर्व करते हैं. ओके, अच्छा अब हमने देखो थोड़ा थोड़ा सब बात कर लिया, चाय का बात कर लिया, तट्टागड़ा का बात कर लिया, टॉडी शॉप का बात कर लिया, ब्रेकफास्ट लंच डिनर का बात कर लिया, स्ट्रीट फूड बात कर, मीठे का बात नहीं किया, डिजर्ट का बात नहीं किया, क्या क्या मीठा वहां पे त्रिवेंद्रम में खास करके मिलता है? त्रिवेंद्रम में ज्यादातर तो मैंने बोला था आपको, बोली. बोली इज हम्म, वेरी फेमस. वो पूरन पोली जैसा है डिट्टो, लेकिन पूरन पोली थोड़ा स्टफ्ड और थिक रहता है. ये बहुत हाँ, फ्लैट रहता है और थोड़ा ओके, फ्लेकी. सेम सेम मिक्सचर है, चना दाल का ऐसे पीस के बनाते हैं, जैगरी सब कुछ डाल के, लेकिन स्टफिंग जैसे नहीं, साथ में मतलब वो रोल करके थोड़ा तवे पे डाल के घी मार के निकाल देते हैं, और सर्व करते हैं पाल पायसम के साथ, मतलब सेम खीर, खीर के साथ ओके, सेव होता है. तो ये बोली ऐसा हॉट हॉट बोली के ऊपर वो पाल पायसम डाल के साथ में वाह, खाते हैं. त्रिवेंद्रम सद्या का भी एक मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो हम्म, सद्या अब अगर खा रहे हो, त्रिवेंद्रम में एक ऑर्डर है खाने का. तो पहले दाल आएगा, फिर सांबर, देन यू कट द मील विद अ स्वीट. तो ओके, तब बोली आएगी. तो इफ बोली इज कमिंग, पाल पायसम विल फॉलो. हम्म, बोली, they'll put बोली, फिर they'll put pour pal payasam, then you eat. Then you have 2 3 other payasams which are jaggery main. Then you bring back the rice. Then हाँ, so it's basically base and then acidic. So after sweet, ओके, they bring you the rasam and हम्म, the curd and buttermilk. So it's like basically your tummy is science going on there. So boli and palpayasam, or हम्म, you'll find even in chai kadas these desserts like godam bunda, that's like made of whole wheat flour made into a dough, deep fried. So that's also ओके, sweet. Unni हाँ, appam हाँ, is very popular. Then there's very one particular dish that's not popular other where anywhere else in Kerala. It's called mundiri kottu. So ओके, mundiri means grape, but it has ओके, nothing to do with grape. It's ओके, actually green gram dal, which is हाँ, roasted, uh, crushed, like made into a powder, mixed with हम्म, jaggery, and it's dipped in a batter of rice flour and coconut milk ओके, and ओके, fried. ओ, But now, when you deep fry it, when you put 3 or 4, it forms the shape of a grape. It'll stick ओ, to the coconut milk and the rice flour. So when you pick it up after frying, it'll be like a triangle. So that's why it's called Mundri Puttu. So this is very popular, and this is a very Kanyakumari influence. It's a very popular street food from Kanyakumari, which came to हम्म, Trivandrum. So you'll only find it in Trivandrum. It's a little hard to bite, soft हाँ, inside. ओके, And these are all Trivandrum style desserts are available in a place called Mahaboli. Mahaboli, महाबली, it's a हम्म, 3 floor store, three ओके, floors full of sweets and snacks. वाह, So banana chips, you will find like 10 to 15 flavors. हाँ, Sweet are red chili dusted, हम्म, sweet banana हम्म, chips with salted, mundiri kota, and you'll find these kept and fried in these huge bartan. You can just go order by quantity. You can be like, I need this much of this much of this much of this, and all of that. वाह। अभी आपने, अंजना, मैं देख रहा था कि हमको मालूम नहीं हुआ कि हम सोच रहे थे कि त्रिवेंद्रम के बारे में, क्योंकि आप बोल रहे थे कि बहुत कम लोग हैं जो त्रिवेंद्रम फूड के बारे में पर्टिकुलरली बात करते हैं, और हमको लगा था कि शायद ज्यादा कुछ नहीं होगा। अभी मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है आपसे क्वेश्चंस की, आपकी अपनी लिस्ट, और वी हैव ऑलरेडी 55 मिनट्स इनटू द शो। मैं रियलाइज नहीं किया, कमाल हो गया है। Thank अच्छा you. ये बताएं, मैं आपसे ना कुछ जिसको बोलते हैं थोड़ा रैपिड फायर की बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस बड़ी क्विकली पूछूंगा। Okay. सो टॉप 3 प्लेसेस और टॉप 3 आइटम्स विच कम्स टू योर माइंड, हमारे रीडर्स के लिए वो बताइएगा कि आई एम टॉकिंग ऑफ वेरियस पॉकेट्स इन इन एंड अराउंड त्रिवेंद्रम। सो इफ आई से कोवलम, सो कोवलम में क्या 2 3 जगह हैं जो आपको फटाफट दिमाग में टॉप ऑफ द माइंड आती है और वहां पे जाके क्या खाना चाहिए? कोवलम बीच के साइड पे आप जाओगे तो बीटल्स बोल के एक कैफे है, वहां पे जाके आप थोड़ा इंडो कॉन्टिनेंटल जैसा खाना मिलेगा, स्क्विड रिंग्स. हाँ, इट्स अ वेरी पॉपुलर बिकॉज टूरिस्टी एरिया जो है कोवलम, कोवलम इज अ टूरिस्ट एरिया. इट्स मोर हाँ, पैलेटेबल टू द फॉरेन क्राउड.
तो वहां Yeah. पे ज्यादातर ये लोकल आइटम्स नहीं मिलेगा. तो बीटल्स एक कैफे है वहां पे बीच के साइड पे, ये तो वेव सब सुन के आप खा सकते हो. देयर इज अनदर रेस्टोरेंट इन द सेम एरिया. देयर इज नो नेम फॉर द रेस्टोरेंट, नाम ही नहीं है उनका. बड़ा सा अच्छा. रहेगा, आप देख पाओगे कि एक कोकोनट लीफ का एक छत रहेगा ऐसे. तो आप जाओ और फिश डिस्प्ले पे रखा जाएगा बाहर. आप बोल हाँ. सकते हो कि ये फिश का मुझे ऐसा बना के दो, वो बना के देंगे. ऐसा मेनू नहीं है वहां पे. So you go there and you're like, I want butter garlic prawns. He'll make it for you. You मैं go गया say हूँ भाई. in Now Trivandrum. now I remember मैं वहां गया हूँ. Okay, yeah. So that's Kovalam area for you. But हाँ. Kovalam has no local very famous Okay. spots. These are the 1-2 spots near the beach that you can find. Okay. Palayam. Oh, Palayam. Palayam, if you come to Palayam area, I will talk about a very small shop. There's a masjid there, Palayam Mosque. There's a dada who sells orange sarbat. So if you अच्छा. go to, yeah, so he sells in a very small shop there. So he stands there with white hair. You can just go and you'll see this machine, him pressing orange juice and putting sarbat and then some basil seeds, and he'll serve it to you. It'll be buzzing. So Okay. Palayam definitely has that, and Palayam has a very famous restaurant in Trivandrum called Zamzam. Hmm. Zamzam is the most popular restaurant in Trivandrum. Anybody who comes to Trivandrum knows of Zamzam. It's an Arabic style restaurant. They हाँ. started the restaurant culture here. So you go there and you have to try shawaya. Okay. Shawaya, it's a whole roast chicken, and that Hmm. marination you won't find in any other restaurant. Oh. So that's a very tasty chicken. Palayam. I would, it seems after the show आप फटाफट वहां जाने वाली हैं. मैं शायद ऑर्डर करूंगी आज रात को शवाया. Okay. Bakery Junction. Bakery Bakery Junction. Junction there, and in Bakery Junction there is a small tattagada called Bakery Tatt. That is the bakery Okay. street food. So it's हाँ. popular. It's been there for very long, very long. हाँ. And they serve parota and chicken fry. हाँ. So Bakery Junction is famous for that. And there's a very small, very old bakery in Bakery Junction called हाँ. Ambrosia. That's probably one of the first bakeries in Trivandrum as well. So you can go Hmm. try their hot dog mayonnaise. You can try their old style burgers, like the cutlet वाह. style burger. Very classic things in Bakery Junction. And you can find a lot of vegetarian restaurants. There was one which just shut down. Otherwise, I would have taken it. It was a beautiful restaurant, Arul Jyoti. Shut down हाँ. recently. But yeah, Bakery Junction is more popular for that bakery tatte. Okay. General Hospital Road. Ooh, General Hospital Road is a little tough. There are a lot of local tattagadas, but हाँ. very famous restaurant, I don't think any. I would suggest anything from that area. Okay. Airport Road. Airport Road, if you go, there's a Sindoor and an Uday Suits there. In that airport road, you can see a Sindoor Plaza on the way, which is like a constant spot for all of the people who go up and down. And Uday Suits is a very famous hotel. So their restaurant is also pretty popular. So if you're a tourist who wants to stay near the airport, I would definitely say Uday Suits and Uday Samudra. Arya's Hotel. Arya's Hotel. Which Arya's though? There are the Arya is a very common name in Trivandrum. So Arya Nivas, Your Arya. choice. Your choice. So I'll say Arya Jodi in Pattam is a good Okay. restaurant. So there's And a what do dining on top floor. You can try their puri masala. You can try their ghee roast. You can try their kottu parota. So these you can even have a dine-in the non-AC, or you can go to the basement for an AC room. East Fort. East Fort is the place that is buzzing with a lot of different cuisines. So if you go to East Fort, it's very close to the Padmanabha Swami temple area. हाँ. So you'll find both vegetarian and non-vegetarian restaurant. So there's a very famous restaurant called Saurashtra, Hotel Saurashtra. Okay. There are two now, but the new one is at East Fort. It's at Article Shopping Complex opposite. So Saurashtra was started by a Gujarati who came to Trivandrum long back. So you get puri, 3-4 curries. There's a fixed menu. There's nothing changing. 3-4 curries, masala chai, some pyaz, and a pickle. That's it. Wow. But it's very tasty. Very tasty. It's my favorite place. Buhari's. Buhari area, if you go, I personally wouldn't recommend Buhari, but if you go to Buhari's area, you can find Ayub's Sarbat Kada. So you can find Sarbat is a very popular thing in Trivandrum, like a drink. Wow.
So, हाँ, and Sharjah shake. So you milk, bananas, dry fruits mixed together with tutti frutti and boost and Horlicks. So you find boost sarbat, Horlicks sarbat. So it's like a milkshake with boost or Horlicks, but we add our sarbat also. Like Ruafza in the north, we have narnari. So okay, narnari syrup in the sarbat with boost or Horlicks. So there, yeah. that area has a lot of shops. You can go for that. Whizzing Jam, I'm not sure where that is. Whizzing Jam. Okay, let's talk about Koviawad. Koviawad, Mm-mm. Koviawad? हाँ, Kowviard, Koviawad, Kavadiyar. Kavadiyar. Kowdiar. Okay, Kavadiyar. Kavadiyar. So Kavadiyar is a very popular place. Hmm. Kavadiyar is where the Raj Bhavan is, where the governor stays. So it was by the Raja. It was owned by the Raja. So it's the most beautiful area to walk by. So if you go to Hmm. Kavadiyar area, there are a lot of restaurants. There's Chapi. Hmm. Chapi restaurant serves great Hyderabadi chicken, lovely Malabar porota, kiri porota, and all of that. And Kavadiyar area, if you go that way, Shastamangalam, you have Chai Bogi there. Kavadiyar area is like the hotspot. You can go to anywhere from there and you'll find restaurants in that area. Paul's Creamery. If you go to Kavadiyar, definitely Paul's Creamery. The best ice See, cream ever. see, you were about to skip this question for me, and Oh, okay. I'm a North Indian, so I may falter with the pronunciation. अभी देखो, Anil Kumar has written this word for me. Why I was asking you? Vizhinjam. Yeah. Vizhinjam is the hotspot in Trivandrum. Vizhinjam area has all the seafood places. So Ustad Hmm. Hotel is a very famous restaurant. There's Yasin in Vizhinjam. So if you go to Vizhinjam, it's again like the Kovalam area, but more food places. That stretch has localites running restaurants, fresh catch in the morning, no fixed Hmm. menu. Whatever fish is available, whatever fish was available that day morning will be on the menu and will be made to order. And there's And no fixed amount also, so it changes according to market price. last on my list is Thampamnur. Hotspot where you come down and get down for Trivandrum. That's the access spot for Trivandrum. Arya Okay. Nivas is a hotel, I mean restaurant for Hmm. vegetarian food. Hmm. Tambanur again, I would suggest my favorite place in Trivandrum, Hotel Highland in Tambanur. My Hmm. family has been going there since I don't know when, my from the time my brother was born probably. Okay. For fights, for happiness, everything we go there to eat. It's Hotel Highland called City Queen for their Yeah. fish curry meals and kingfish fry. Okay. Okay. That would Last be. question from the audience. Arun Kaul is wanting to know which is the best place for idiyappams in Trivandrum. Ooh. Okay, idiyappams. Best place for idiyappams. There's a restaurant called Narayana Bhavan in Statue. They Hmm. have really good idiyappam and chicken perettu. Most of the restaurants have idiyappam, so you can try out Steam Pot in Pattam has great idiyappams. You can try. You can go to Palayam area, Statue Hotel as idiyappam. So idiyappam, but it's very different from the rest of Kerala idiyappam because usually in rest of Kerala you find these flat nool put idiyappams. Hmm. Trivandrum idiyappams are fat, like Hmm. little fat, small, gundi idiyappam. So you can go to in Pattam Plamood area, you will find a lot of small restaurants. Kairali, you will find Al Hassan. These places serve idiyappam veg kurma, idiyappam chicken curry, idiyappam buff roast, and all of that. अंजना, इतना मजा आया मुझे आपसे बात करके, एंड Thank मेरे को टाइम का पता नहीं लगा, 1 घंटा और 4 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं, एंड वी वर थिंकिंग वी विल बी एबल टू रैप इट अप द शो इन अबाउट 45 मिनट्स, बट मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ, अभी देखिए अनिल कुमार ने एक इतना इमोशनल मेरे लिए छोड़ दिया है। मैं किसी Indian भी coffee. खास इंडियन कॉफी हाउस, तो मतलब इंडियन कॉफी हाउस का जिक्र ना हो तो कुछ चलता नहीं है। तो आपका इंडियन कॉफी हाउस का, चलिए लास्ट एक क्वेश्चन ले लीजिए, इंडियन कॉफी हाउस Indian coffee house का तो everyone's favorite is the beetroot cutlet, the veg cutlet. मेरा है। तो लेकिन मटन कटलेट है वहाँ का, मटन है। कटलेट और मटन ऑमलेट. I ओके। love it. I love the on in Trivandrum. If you come, there's a very iconic Indian coffee house. एक spiral building है तंबानूर में, और हाँ। ऐसा वो spiral में ही सीटिंग रहता है. तो ओ। ऐसे ऊपर जाओगे तो राइट साइड में सीटिंग, ऐसे 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 जाओगे तो ओ बिल्डिंग भी वाह। बाहर, एक ब्रिटिश आर्किटेक्चर है वो, बहुत साल हाँ। पहले का, रेड ब्रिक्स में ऐसा. हम्म। तो यू सी इट इन तंबानूर. एज सून एज यू लैंड यू विल सी द दिस थिंग.
So you can go to that and try out the mutton omelette with the beetroot ketchup. यहाँ तो मेरे को जाना ही है। Yes, आप आ जाओ बस। अंजना, थैंक यू वेरी मच। चलते-चलते ये बता दीजिए कि मेरे जैसा आदमी फूडी अगर त्रिवेंद्रम में आए तो कितने दिन की छुट्टी लेके आए कि वहाँ का फूड का थोड़ा टेस्ट कर। अगर आप आओगे ना तो एकदम तो 2 हफ्ते तो आ ही जाओ, क्योंकि बहुत सारे और चीजें देखने के लिए, डबल डेकर बसेस हैं, पुलिस को हाँ। हॉर्स जाते हुए देख पाओगे आप, और ये सब फुल सीनरी देख के, इतना बीचेस और हिल्स देख के, खाना भी खा के, तो 2 हफ्ते तो आसानी से निकल वाह जाएगी। भाई, वेरी गुड, गुड। अंजना, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना टाइम हमको दिया। आई नो आप बहुत बिजी हैं, आपका भी F&B इंडस्ट्री में कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बट स्टिल आपने मेरे को टाइम दिया और त्रिवेंद्रम के बारे में बात किया। आपने बहुत ही इमोशन के साथ बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। Thank you so much for inviting me. Thank you so much for this opportunity. And thanks to everyone who is listening and who will be listening. Thank you so much for sharing so much love for what we do towards food. And hopefully all of you will come to Trivandrum. तो Eat at Trivandrum का मतलब मन में रखिएगा। अगर कुछ चाहिए तो Instagram में Eat at Trivandrum देख लीजिएगा। And वहाँ पे आपको food recos और suggestions मिल जाएगी। Thank you, वेरी sir. गुड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अंजना। थैंक्स अ लॉट। So much. Thank you. तो ये थी अंजना गोपा कुमार। इन्होंने इतना लाइवली आज का शो किया। और अनिल कुमार, थैंक यू आर सेइंग यू ब्रॉट मी बैक टू माय त्रिवेंद्रम व्हिच इज एन इमोशनल इमोशन फॉर मी। आई थिंक थैंक यू, आई मस्ट से थैंक्स टू अनिल भाई एंड मुर्तजा भाई, जिन्होंने क्वेश्चंस पूछ के शो को लाइवली बनाया। एंड थैंक यू टू अंजना फॉर मेकिंग दिस शो वेरी वेरी लाइवली एंड वेरी इंटरेक्टिव। जल्द ही एक नए शहर की बात करेंगे, नए शहर के खाने की बात करेंगे। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हम जल्दी ही एक नए गेस्ट को लेकर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।